Good morning students. Today we will discuss about the close packing in 3 dimensions. And last class we have discussed about the placing the second layer over the first layer, and now in this class we will discuss placing the third layer over the second layer. Okay, so now I am drawing the figure here. Third layer we are going to place now. Okay, so we are starting by So this is the diagram. Actually I am drawing to show how the third layer is coming here. Look at here, if this is the A, then this one is coming B, again the third layer. So up to that we have discussed A, above that B is coming, means it is coming, the atom is coming over the triangular, we can say voids of second layer of, means we can say the first layer is coming, the atom is coming over the second layer, which one, triangular voids. Up to that we have completed. Now C layer, what I am pressing here, third layer in case of 3 dimension. So here A, B and C, so C is coming here, again third layer is coming here about A, so it is repeating A, B in that way it is repeating. So now you can see that one, the atom of the third layer it just present the triangular voids of the second layer. So again the atom of the fourth layer is present just there, again it is coming about the triangular voids. So definitely one atom is present above the triangular voids of the next layer. So what is the tetrahedral, the condition tetrahedral voids are created there when the, suppose in that condition we can see here ki tetrahedral voids, because this atom is present over the triangular voids of the second layer. So definitely what is the voids created between these two layers here, tetrahedral voids here. Okay, so now what will be the structure? I am drawing the structure here. What will be the I will be drawing here. So here what is the close packing structure is formed, I have to draw here. This is the first layer and this is the first layer. Again I am drawing the second layer here. Okay, and again I am drawing the third layer here. Okay, according to that. So you can see here the atoms are also I am drawing. Okay, and here also the atoms are I am drawing here, and here also. So now I have to join, and here also you can join here. This one also have to draw. So look at there, what is the structure forming here? This structure is known as hexagonal close packing structure. What is the structure here? Hexagonal close packing structure, where the third layer in case of 3 dimension is just repeating the first layer here. Okay, A, B. In that condition, what is the close packing structure we form there? HCP. What is the coordination number? You can see there, this atom is connected with 6 atom, and below 3 and above 3. That means it is coming here, total coordination number is coming here 12. Okay, coordination number is coming here 12. Next one, for another condition. In another condition, what is actually I have to draw here? Again I am drawing. This is another condition. Third layer of course is coming, but the third layer is not repeating the first layer. Look at it. And now okay, this is second layer, and what is third layer here? Look at it. This is the third layer. So third layer is not repeating the first one. And again I am drawing. So fourth layer, this one is the fourth layer actually, and this is the fourth layer here.
this fourth layer is repeating the first layer. So in case that condition, we can say here A, B and C. You can see that one, the atoms are actually, third layer atoms are present just above the octahedral voids, covering the octahedral voids. So here in this case, 1 minute, you can say here covering which voids here? Tetrahedral voids, tetrahedral voids. In condition of hexagonal close packing structure, third layer is covering the which voids here? The tetrahedral voids. Look at there, this atom is present over the triangular voids of the which one? Second layer. So definitely दोनों लेयर मिलके कौन सा voids बना रहे? टेट्राहेड्रल voids, और उसके ऊपर थर्ड लेयर प्रेजेंट है, और यहाँ पे दोनों लेयर मिलके कौन सा voids बना रहे? ऑक्टाहेड्रल voids, उसके ऊपर कौन है ना? This one, that means the third layer is present just above the octahedral voids of the first and second layer. So here what we can write down? Covering which voids here? Octahedral voids. Clear? दो तरह की होता है when you are placing the third layer over the second layer. So either they can cover the first and second layer tetrahedral voids, or they can cover the first and second layer की octahedral voids. So here we can see that one, it is coming hexagonal close packing structure. Here coordination number is coming 12. So we can see now what is the structure coming for this condition. Okay, just I am placing the atoms here. Look at here. And one more condition from the down. Look at this two structure I have drawn here. 1, 2, and then it is coming 1, 2, 3, and 1, 2, and 1, 2, 3, 4. And here also it is coming. This one is the structure. Look at here. What is the structure form here? FCC. What is the structure form here? Face centered cubic close packing structure. So that's why again I am drawing. When I am drawing this structure one more time, so this will be happening in this way. So look at here, every face is having the 1, 2, 3, 4, 5, and it is coming front one, 6. So every face is having the, we can see here, you can count here also, every face is having which one? The, we can say 1, 1 atom there, and every corners are also occupied by the atom here. So this is called FCC, or face center cubic close packing structure. So in case of when the covering octahedral voids, third layer is covering the octahedral voids. So at that condition, they are forming which one? FCC, and if they are covering the tetrahedral voids, they are forming the SCP. Both the condition, what is the coordination number? देखो यहाँ पे क्या coordination number है? Now this one is coming here 6, above 3, again below 3. So it is coming again. Coordination number is coming here. Coordination number is coming here 12. So both the condition, coordination number is coming 12, and how it is forming? How it is forming this? So how it is forming the FCC structure here? Already I have shown you here the two. This one is connected, and again this one is connected here. These two are connected here. So every face is having which one here? These two are connected. Again from here, these two are connected, and from here these two are connected. Means this
two layers are connected here. So now you can now join this. So you can get here every face is having here what is now one face center structure. So that's why it is called the FCC and this one is called the HCP structure. Both the coordination number is coming here 12. अच्छा, next one we are coming for the formula of a compound, है ना, बहुत important है this one, formula of a compound and number of voids. Okay, number of voids filled. In that condition we have to write down, we have to find out what is the formula of the compound there. So first we are saying one thing here, let the number of close packed sphere equals to n. अगर जो स्फीयर ये जो बन रहा है ना, ये स्फीयर जो है, if the number is coming n, then the number of octahedral voids कितना आएगा, number of octahedral voids is coming n and number of tetrahedral voids is coming here twice n. Okay, these things are clear. So now we are going to the numerical directly. So you can see that one, how we are solving the numerical. Now, so one question already I have written here, so that one I have to solve first, then I am going to the book question. This is also book question. So look at there, a compound formed by two elements है ना, x and y. Atoms of the element y that is forming as anions make the CCP. CCP means cubic close packing structure. Already we have drawn that at FCC जिसको बोलते हैं, उसको ही बोलते हैं cubic close packing structure. And those of the element X as cations occupy all the octahedral voids. What is the formula of the compound? तो अभी octahedral voids के बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली और tetrahedral voids के बारे में बात कर ली और आप लोगों ने यही बोला कि अगर number of sphere means number of atoms, ये जो बना रहे हैं ना, these are actually called the number of spheres. Suppose these are the जो है ये हो गया एनाइड, ये साइज थोड़ा बड़ा है और यहाँ पे जो आगे these are actually triangular voids है ना, ये एपेक्स अप और एपेक्स डाउन हुआ. तो अभी अगर आप थर्ड लेयर को इधर प्लेस करोगे, सेकेंड लेयर को इधर प्लेस करोगे, दिस इज एक्चुअली 3 डायमेंशन कंडीशन. तो अगर सेकेंड लेयर को अगर आप प्लेस करोगे तो क्या कंडीशन हो जाएगा, दिस विल बी टेट्राहेड्रल voids बिकॉज द एटम इज प्रेजेंट ओवर द ट्रायंगुलर voids ऑफ द फर्स्ट लेयर. ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रल voids क्रिएट होता है. और अगर आप इस कंडीशन को क्रिएट करोगे तो दिस वन देखो, एक एपेक्स अप और एपेक्स डाउन और दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल. ये कौन सा voids क्रिएट करेगा, दैट इज ऑक्टाहेड्रल voids एंड दिस वन इज फॉर्मिंग द टेट्राहेड्रल voids. अभी समझ में आए, अगर एटॉम ये जो क्लोज पैक स्फीयर है ना, ये अगर n है तो टेट्राहेड्रल voids कितना आएगा, टेट्राहेड्रल voids आएगा ट्वाइस n और ऑक्टाहेड्रल voids कितना आएगा ना, n आएगा. कितना ऑक्टाहेड्रल voids क्रिएट होगा, n नंबर ऑक्टाहेड्रल voids क्रिएट होगा और टेट्राहेड्रल voids कितना होगा, ट्वाइस n. बस इतना तक क्लियर है आपकी. तो a compound formed by 2 elements x and y, atoms of the element y that is anion. anion का साइज क्या होता है, बिगर होता है, आपको पता है, क्योंकि पेरेंट एटम से anion बिगर होता है और पेरेंट एटम से कैटायन क्या स्मॉलर होता है. हमेशा कैटायन क्या होता है, ये जो voids क्रिएट होगा ना उसमें ऑक्युपाइड होगा और anion जो है ना ये क्लोज पैक स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा. मतलब ये जो स्फीयर बनाएगा, स्फीयर्स आर एक्चुअली दे आर फॉर्म बाय एक्चुअली anion. और ये जो voids क्रिएट होगा, छोटे छोटे स्पेस जो स्पेसेस एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट होगा, उसके अंदर कौन सेटअप हो जाएगा ना, कैटायंस. तो अभी देखो यहाँ पे बोला एटॉम्स ऑफ एलिमेंट y एज एनायंस मेक अप द व्हिच वन, CCP क्लोज पैक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन किए. दोस ऑफ द एलिमेंट x एज कैटायन ऑक्युपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल voids. तो नंबर अभी आंसर में आ जाते हैं. आंसर व्हाट यू कैन से हियर, इफ द नंबर ऑफ व्हिच वन, क्लोज पैक्ड स्फीयर है ना, क्लोज पैक्ड स्फीयर और सिंपली आप स्फीयर भी बोल सकते हो, स्फीयर इज n. मान लो ये जो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज n. सो डेफिनेटली एनायंस मीन्स व्हिच वन हियर, y इक्वल्स टू कितना है, n है.
ठीक है, क्योंकि y ये स्फीयर्स फॉर्म कर रहे हैं, तो y इक्वल्स टू n। और डेफिनेटली अगर नंबर ऑफ क्लोज स्फीयर n है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना आएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आएगा n। तो यहाँ पे क्या बोल के रखा है, एलिमेंट x ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। व्हाट इज द फॉर्मूला, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स अगर कौन क्रिएट कर रहे x, तो x इक्वल्स टू कैटायन, x इक्वल्स टू कितना आएगा ना, जितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स उतना ही आएगा। तो डेफिनेटली रेशियो क्या आएगा, x इज टू y की रेशियो क्या आएगा, n इज टू n, दैट इज 1:1, that means it is coming, the formula is coming here xy. What is the formula here, formula is xy of the compound. बात समझ में आई। one more question is also there, look at here, देखो atoms of the element, 1 minute है ना, इसको सॉल्यूशन भी इधर बता देते हैं। atoms of the element B form HCP lattice, वही हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो थर्ड लेयर की मतलब जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर अप कर रही है उसमें HCP लैटिस आएगा। एंड दोज ऑफ द एलिमेंट A ऑक्यूपाई द 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बाय द एलिमेंट A एंड B। तो अगेन आई एम डिस्कसिंग हियर, देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें बोल के रखा है कि B फॉर्म HCP लैटिस है ना, और A फॉर्म, ए में क्या आएगा 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो डेफिनेटली ये अंडरस्टूड हो गया आपकी कि जब वॉइड्स में आ रहे दैट इज कैटायन है ना, दे आर फॉर्मिंग द कैटायन है। तो बी फॉर्मिंग एनायन, तब बी क्या हो गया, बी इज एनायन और दे आर फॉर्मिंग द HCP लैटिस, सो दे आर स्फीयर्स। स्फीयर्स इक्वल्स टू व्हाट यू कैन से है नंबर ऑफ एटॉम, अगर आप n ले लो। तो यहाँ पे B जो है एनायन जो स्फीयर्स फॉर्मेशन कर रहे दैट इज n, और A जो है कैटायन, देयर फॉर्मेशन इज 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो अगर स्फीयर्स क्लोज पैक स्फीयर्स अगर n हो तो डेफिनेटली टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना आएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज कमिंग हियर ट्वाइस n। एम आई क्लियर नाउ। तो ट्वाइस n अगर हो उसकी 2/3, तो A इक्वल्स टू व्हाट वी कैन से 2/3 ऑफ विच वन, ट्वाइस n, दैट मीन्स इट इज कमिंग 4n/3। एम आई क्लियर नाउ। सो नाउ वी आर कमिंग टू द फॉर्मूला। तो अभी रेशियो क्या फाइंड आउट करेंगे, A इज टू B, तो A इज टू B मीन्स विच वन, 4n/3 इज टू n, दैट मीन्स इट इज कमिंग 4n इज टू 3n। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, सो फॉर्मूला इक्वल्स टू what we can write down here, A4B3। clear now।